They say that a life of success and achievement is a direct result of utilizing the power of positive thinking. With positive thinking and lots of hard work, आज मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस इंटरव्यू के अंदर एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट, मेरी स्टूडेंट जो कि जुड़ रही हैं महाराष्ट्र से और जिनकी एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया जर्नी रही है क्लैट की। इन्होंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट हासिल किया है। आई टेल यू मोर अबाउट हर जर्नी एंड उनसे पूछेंगे कि व्हाट इज इट दैट वर्कड इन हर फेवर एंड हैज टेकन हर टू वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ स्कूल्स ऑफ इंडिया नाउ। फॉर द नेक्स्ट 5 years she is going to have a magical experience in one of the coveted most prestigious law schools of India. And we all are super duper excited to know more about this young talented bacha. She has secured an all India rank of 232. Yes, a 3-digit magical number, 232. And ये जो 232 रैंक है ये अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर हासिल किया है कुशाग्री मेरी स्टूडेंट ने। सो विद मी टुडे इज फ्रेंड्स कुशाग्री। Kushagri, welcome to the session. It's so good to have a direct one-to-one conversation with you after the result. Thank you, sir. Thank you so much for the introduction. It is my pleasure to be here. So Kushagri, friends, is here and हमें कई कुछ जानना है about Kushagri. So how about Kushagri? Let's begin with the basics first. आप हम सबको please थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बच्चे। So hello, my name is Kushagri Vyas. I am from the city of dreams, or Mumbai as we call it. I am currently in 12th grade and in the stream of commerce. एक्सीलेंट। तो कॉमर्स स्ट्रीम की स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बोर्ड के एग्जाम देने हैं ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी हैं अपने नेक्स्ट 5 years एंड दैट टू इन वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ स्कूल्स। व्हाट बेटर कैन वन एक्सपेक्ट? कुशाग्री, हर कोई आज की डेट के अंदर देखा जाए अगर 10th के बाद 11th 12th में स्ट्रीम चूज करनी होती है, सम स्टूडेंट्स गो फॉर मेडिकल स्ट्रीम, देन मेनी गो फॉर इंजीनियरिंग, मेनी अदर स्टूडेंट्स चूज नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक बीए और बीएससी। आपने बच्चे कैसे चूज किया कि यार सीए नहीं करूंगी या कुछ और नहीं करूंगी, मैंने सिर्फ लॉ में ही परस्यू करना है करियर? व्हाट मोटिवेटेड यू? So, sir, I basically come from a family of lawyers. Both my parents are lawyers. In fact, you and my father, you share an alma mater of NLU Jodhpur. So I think the law ka presence in my house has been there since I was a kid. And then in sixth grade, I think I read a book by John Grisham, which was about this 13-year-old kid जिसके दोनों parents lawyers थे. And उसको हमेशा एक inquisitiveness रहती थी जानने के लिए कि उसके parents क्या कर रहे हैं. And I think कि उस चीज को पढ़ के, उस बच्चे की स्टोरी को पढ़ के, I felt curious into knowing what my parents do, and I think udhar se the journey started as an interest in class or law itself. So this is quite interesting. Kushagri and other friends जो कि ये इंटरव्यू देख रहे हैं, let me share this instance with you. The other day I was taking the interview of All India Rank 104 देवव्रत, my friend, and देवव्रत ने भी एक ऐसा ही आंसर बताया था। कई बार ना कुशाग्री जो हमारे अराउंड सराउंडिंग्स हैं वो सर्कमस्टांसेस हमारे को मोटिवेट कर देते हैं, प्रोपेल कर देते हैं। तो देवव्रत गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। ही टोल्ड मी कि सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर इज दिस टीवी सीरीज सूट्स, एंड मैं आपको बताऊं तो सूट्स से सबसे पहले मेरा इंटरेस्ट जागा एंड वहां से मेरे को लगा कि यार कॉर्पोरेट लॉ होता क्या है, एंड दैट जस्ट गॉट मी इनटू दिस फील्ड। एंड धीरे धीरे करते करते मैंने क्लैट एक्सप्लोर किया। नाउ दिस टाइम अराउंड आप जो ये बेस्ट सेलिंग लीगल जॉनर की नॉवेल्स हैं बाय द वेरी फेमस ऑथर, इनकी बुक पढ़ के you got motivated. So all of this is very very interesting for me as a mentor to know कि आजकल students, they are getting the exposure from society, various platforms, whether it is literature, books, novels, fiction, TV series, and I'm so glad that you chose this field. And it's so good to know this, ये जो NLU की family है friends, it is a very warm knit small family. It's so good to know that your father, sir, and we have the same, we share the same alma mater, and so happy now that you also will be a part of the NLU family. Once again, welcome to the NLU family. The next question, Kushagri, loads to know from you, bache. You will be studying in one of the, you can say, dream law schools for so many students out there.
एंड इस फाइनेस्ट लॉ स्कूल में आप पहुंच के हाउ इज द होल फीलिंग, जस्ट डिस्क्राइब द फीलिंग. Feeling is quite indescribable, to be honest. I think the first and the most foremost feeling is gratitude. Gratitude towards God Himself, the first thing. Gratitude towards my parents, gratitude towards my teachers and mentors, and to the peer group that I had, which was very supportive and nurturing environment that I was in. So I think gratitude is the first feeling. The second is excitement. The feeling is not sunk in yet, but you can still sense the excitement I because can, now I I'm can. in one of the finest law schools of India. So I think excitedness and gratefulness and even elated. I'm even elated about all of this. So I think that would pretty much sum up the entire feelings. So that is good. You have a good solid 6-7 months before the session begins, and I'm pretty sure that it's not just for a day or two. This excitement is going to be there till you set your foot in the campus of the law school and खुद से experience नहीं करते. मेरी best wishes हैं. It's going to be a very very beautiful journey till the law school and even beyond that. बहुत ज्यादा मजा और आने वाला है और बहुत कुछ सीखोगे. कुशाग्री, बहुत सारे बच्चे एम करते हैं हर साल क्लैट का पेपर क्रैक करने का. एलेट पेपर भी होता है और इन दोनों एग्जाम्स को बहुत हजारों बच्चे देते हैं हर साल. बट हर कोई ये जानना चाहता है कि 12th क्लास के साथ साथ आपने अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर कैसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को मैनेज किया, इसकी प्रेपरेशन को. एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं बिगिन करूंगा. आप थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताना हमारे दोस्तों को कि वो भी कैसे कर सकते हैं क्रैक. क्वेश्चन ये है कि आप कितने आवर्स पढ़ते थे डेली. Okay, so considering I'm a school student right now and I'm not in one of the junior colleges that are there in Maharashtra where you can choose not to go to the college if you have an attendance at school. So I apart from the school, it would be 8 to 9 hours every day. So school mein I used to take my GK notes and so I could sit between the classes during the free periods or the zero periods. I used to take sectional practices in so school itself. Mocks लेके चली जाती. So if there was some periods जिसमें कुछ नहीं करवा रहे थे, so I would sit in the library solving the mocks or giving the sectionals or just revising GK notes. So I think keep balancing it out and then stealing time for the practice for the entirety of the CLAT journey is very important. You need to steal time because if you're in 12, then you know how hard it is to balance between these two things. Very beautifully answered, and I love the choice of words here by Kushagri. She said, steal the time from your other, you can say, commitments and take out time, make CLAT your priority. तो definitely अगर कुशाग्री स्कूल के साथ साथ 8 से 9 घंटे, and I just appreciate how honest she is giving the answers. It's not like कई बार हम एक थोड़ी गलत पिक्चर पेंट करते हैं. Oh, I didn't used to study more than couple of hours. I'm a गिफ्टेड चाइल्ड और मेरा हो गया. बट दैट इज नॉट द ट्रुथ. मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए सक्सेस के लिए, बट साथ में मेहनत भी चाहिए, और मेहनत के लिए जो डिवोट करेगा टाइम वो ही बाजी मारता है. स्टीलिंग टाइम से एक और फैक्ट यहां पर इलाबोरेट करना चाहूंगा फ्रेंड्स. A winner, a loser, each and every one on this planet Earth has the exact same number of hours in a day. 24 आवर्स को कैसे आप यूटिलाइज करते हो वो डिफाइन करता है वेयर यू एंड अप, वेदर ऑन द विनर साइड, वेदर ऑन द रिग्रेट वाला साइड. सो प्लीज चूज वाइजली, बी लाइक कुशाग्री, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करो, क्लैट को प्रायोरिटाइज करो, एंड डेफिनेटली 232 रैंक अगर ये बच्चा ला सकता है तो आप भी ला सकते हो. ना कुशाग्री, आपने जो ये सेक्शनल्स को प्रैक्टिस करते थे और जीके के नोट्स ले जाते थे, इसके अलावा बच्चे आप एक अगर जनरल लेवल पे एडवाइस देना चाहो, कोई भी आज की डेट में फ्रेश स्टार्ट कर रहा है क्लैट की तैयारी, वेदर ही इज इन 10th क्लास, 11th और राइट नाउ इन 12th क्लास वाचिंग दिस इंटरव्यू, how can he also crack CLAT and dream to study in tier 1 law school? As cliche as it sounds, I think the मेरे तरफ से advice, the first and foremost advice would be consistency. Maintain the consistency, be consistent in your preparation throughout whatever time span you're preparing for. If you're in 11th right now, then you have an entire almost 2 years. So be consistent throughout all those years. अगर आप अभी 12th में है, तो then whatever time you have left, then just put in the hours and put in the efforts right now because consistency is very important. क्योंकि in case due to some reasons you're not able to work on it for a couple of days or for a couple of weeks, then you shouldn't feel that regret.
So if you're already consistently preparing for it, then I think you can take out a couple of days or a couple of weeks to take time out due to whatever reasons they may be, and then you can compensate for them. So I think key first and foremost would be consistency, because consistency at the end of the day is the key to anything. The second I think it will be mental stability. You sir once said, तो आपने मुझे बोला था कि emotional quotient should always be more than intelligence quotient, EQ always greater than IQ. I think is very applicable, because if you, for example, had a bad mock, so it does not make sense that you wallow about it for a very long time and you miss out on the learnings that you can get from them. So if you had a bad mock, but if your emotional quotient is high, then you can take the positive aspect out of it and then you can apply it कि आगे जाके ऐसा नहीं है. The main point is to not make the same mistakes over and over again. तो अगर एक बार गलती हुई कोई बात नहीं, उसमें से सीख लो उसमें से क्या गलत किया, and then put it on to work. उसके बाद I think the basics remain to be that optimistic रहो, stay determined to your path as well. मतलब you need to make sure that you're in for it. You cannot be half in, half out. If you're in for it, then you're in for it, and then you're just determined and putting the efforts throughout whatever time you have, and then believing in yourself, because at the end of the day, you're the one who has to crack it. So if you're not believing in yourself, then how will you manage it? Because I think that sets a very positive tone for your mindset. Kushagri, tell me honestly, I'm glad that you remembered EQ greater than IQ. Tell me honestly कि जो belief वाला part आप बोल रहे हो, did that All India Rank 1 in front of your name, AIR1 Kushagri, did it actually motivate you? I definitely think, sir, कि आपका जो तरीका है कि you always ask us to put AIR1 rank, AIR1 in, ahead of our names. I think help करता है वो, because when you're looking at it constantly and when it is just there on your study area, then you're looking at it constantly, you're going through it, and then you're just putting it in your head that yes, you can achieve it. So just the can-do attitude itself helps tons in these matters. Perfect. So that's a very beautiful advice, friends, coming from the topper herself. And if she believes that these things played a crucial role in her preparation, I'm pretty sure वो experience से जो वो बता रही है आपको, अगर आप भी ये imbibe कर लो अपनी personality के अंदर कुछ चीजें, because to be very, very honest, nobody can exactly predict the question before the examination. It is just the Definitely. cool, calm, composed attitude with which you can approach the questions that can make the difference. Right? कुशाग्री, एक और चीज मैं स्टूडेंट्स की ताकि हेल्प हो सके यहाँ पर अच्छे से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे को कहते हैं कि सर पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ बट मेरा OMR फिल नहीं हुआ, सर मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा था बट एक ऐसा सेक्शन था जो कि मैं टाइम ही नहीं डिवोट कर पाया या कर पाई, एज अ रिजल्ट सर एंटायर रिजल्ट गॉट इट वेंट डाउन द ड्रेन. टाइम मैनेजमेंट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. पहले एक टाइम था जब 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे इन 2 आवर्स. इनफैक्ट जब मैंने क्रैक किया था क्लैट, उस टाइम पे कुशाग्री 2 आवर्स का टाइम था एंड 200 क्वेश्चंस होते थे. उसके Yeah. बाद देयर केम अ टाइम फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम आई कैन रिमेंबर 150 क्वेश्चंस थे, एंड दिस टाइम अराउंड पैटर्न जो था 120 क्वेश्चंस पे आ गया. बट फिर भी बच्चों का पेपर छूट रहा है. तो आप बहुत ज्यादा एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर सकते हो अगर आप गाइड कर पाओ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि वो कैसे टाइम मैनेज करें ताकि आपकी तरह उनका पेपर अच्छा हो सके. Definitely, sir. I think the biggest thing कि जिस पे आपको focus रहना चाहिए if you're preparing for a competitive exam like this, जिसमें time is very crucial and important and a determining factor, I think, is your reading speed. Because I have been an avid reader since I was a kid. I used to love reading fiction. I used to love reading books. So I think so I had developed a bit of a reading speed which was higher in comparison to my counterparts. तो उसकी वजह से I think I had an edge कि मैं ज्यादा पढ़ पाती थी in कम time. So I would suggest that somebody who does not already have a reading habit start developing one. I would suggest start with the basics. So मतलब you can devote 45 minutes in a day to reading, and it should not just be fiction, because as much as I love fiction, CLAT does not just ask on fiction. So you need to get well versed with different sources and different varieties of genres to read from. आपने कभी philosophy उठा लिया, कभी politics उठा लिया, कभी history उठा लिया, कभी science उठा लिया. तो अगर आप already read कर रहे हो अलग अलग subjects से for a good amount of time, तो आपका reading speed over the time develop हो जाएगा. So that would give you an edge and that would increase the time management का aspect जो कि completely है
CLAT based way. I completely agree, Kushagree here. They say that Rome was not built in a day. So magic cannot happen overnight, but consistency, like you mentioned during the advice part also, consistently अगर कोई भी काम किया जाए, you hone that skill and that becomes your edge. For example, Kushagree here is an avid reader. But do you remember when she told me कि सर मैं 6th क्लास में एक legal genre की book पढ़ रही थी जिससे मेरा interest develop हुआ towards law. There has to be a beginning. For her, maybe it was in 6th class. For you, it can be today. जब भी शुरू करो, मेक श्योर कि आप धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करो, अपने रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करो. एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कुशाग्री, मैं खुद बुक्स पढ़ने का बहुत शौकीन हूं, और वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, दिस इज द बेस्ट एस्केप फ्रॉम एनीथिंग बोरिंग. आप कुछ भी बोर Yeah, हो रहे हो, दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वंस टाइम. यू कैन रीड समथिंग एंड इट जस्ट कीप्स यू ऑक्यूपाइड. प्लस it is definitely better than spending time Netflixing or scrolling through reels on different social media platforms. Because अगर आप fiction भी पढ़ रहे हो, at the end of the day, you're getting something out of it. true, your vocabulary, your reading speed, your comprehension skills, and most importantly, a good solid rank in CLAT is getting ensured the more you read. So, Kusagri, it's lovely that how students like you, not only are you yourself achieving things, but you are also leading by example. कि भाई ऐसे ऐसे मैंने क्रैक किया, 8 से 9 घंटे देती थी मैं, हर रोज कंसिस्टेंटली पढ़ती थी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहती थी, मॉक के मार्क्स को अफेक्ट नहीं होने देती थी, अपनी प्रेपरेशन पे कोई असर नहीं आने देती थी, रीड करती थी काफी वेरिड सोर्सेज से. तो आई एम सो हैप्पी कि आप जैसा एक बच्चा और कई सारे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, एक पाथ बता रहा है कि अच्छा दीज आर द बेसिक्स, एटलीस्ट इनको टिक मार्क कर दो इन द चेकलिस्ट ऑफ योर क्लैट जर्नी, एंड ट्रस्ट मी यू विल गो टू अ गुड सॉलिड कॉलेज. जीके के बारे में भी आपसे थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा. जीके हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. Yeah. 25% स्ट्रेट अवे वेटेज है इसकी. एंड इसके अंदर जो ट्रिकी पार्ट है दैट इज कि इट इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. हाउ डिड यू मैनेज टू कॉन्कर जीके? हाउ वर यू कॉन्फिडेंट इन जीके एंड हाउ डिड यू इवेंचुअली एक्सेल इन जीके? I think confidence is slowly built in GK because GK ka the most important thing that I learned from you as well was ki foundations and fundamentals should be very solid. You start from the basics, you build your way up to the current things. तो अगर आपको ये पता है कि बेसिक्स क्या है किसी भी चीज के, तब धीरे धीरे यू कैन मैनेज एंड यू कैन कोप अप विद द करंट अफेयर्स. द मोस्ट important part is keep revising, keep memorizing, and keep recalling those GK notes which you make through classes or which you make through newspapers or anything you refer to GK for. GK के confidence is built जब आप बहुत ज्यादा रिविजन करोगे, जब आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो कॉन्फिडेंस कम्स ऑन very easily and it comes out on its own. आई एम ग्लैड टू नो दैट कि अगर कोई फंडास पे फोकस करे, और मैं भी आई कंप्लीटली एग्री विद हर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई ऑलवेज फील कुशागरी इवन बुर्ज खलीफा or a normal building, they have one thing in common, they have a solid foundation. Foundation एक बार बनी हो, उसके बाद adding the stories to the building is just a matter of time. But foundation solid होना बहुत जरूरी है, और साथ में recalling word बहुत जरूरी है. It is one thing to study 100 topics, it is another thing to retain them, and for retaining you have to You be need to very very, recall. yes, completely agree. कुशागरी, बहुत ज्यादा चीजें जानने को मिली आपसे. मेरे को आज भी याद है कि हमारी जो जर्नी है, इट हैज बीन वेरी वेरी, यू कैन से फिल्ड विद सो मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स. कई सारी मोमेंट्स फ्लैश हो रही हैं दिमाग के आगे, कई सारे हार्टफेल्ट मैसेजेस याद आ रहे हैं आपके द्वारा जो पढ़े, कई सारी चीजें मुझे याद आ रही हैं जो मैंने सीखी आपसे. हार्ड वर्क और इंक्विजिटिवनेस और अपनी चीज को लेकर पर्टिकुलर होना, अपनी चीजों को फिनिश करना, एंड देन टास्क को खत्म करते करते एक्सेल करना. ओवरऑल अगर आपको इस जर्नी को बताना हो हमारे दोस्तों को, हाउ हैज योर एक्सपीरियंस कुशागरी बिन विद मी, विद एक्सेल विद निखिल? कुड यू जस्ट टेल दैट? It has been a very wonderful and enriching experience. I think GK के topics को cover करना, that too while maintaining a interesting in this thing environment is very difficult, and I think that is what you get in Excel with Nikhil.
एक इंटरेस्टिंग वे होता है जीके को समझने का. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. टेक्निक्स काफी इजीली समझाई जाती है. देन यू ऑल्सो हैव the guidance of a mentor who has been a part of the NLU family, who has such an prestigious alma mater like yourself. And then nervous energy को control करना, recall करना, काफी ज्यादा enriching और काफी ज्यादा बहुत अच्छा experience रहा है. Kushagri, you told about so many different aspects. I'm glad that you had a very fruitful, enriching experience. And trust me, ये जो journey है ना बच्चे, it was never meant to be up till this point only. ये एक lifelong bond है. Once an Excel with Nikhil family integral member, always a family member, always a lion who roars throughout life. And मैं आगे भी अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े या कभी भी ऐसा मौका हो जहां पर मैं आपको गाइड कर सकूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी. सो दैट बॉन्ड विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लॉ स्कूल एज वेल एंड इवन बियॉन्ड दैट. जहां तक हो सकेगा पॉसिबल, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन. एंड कुशाग्री, यू आर डेफिनेटली नो एक्सेप्शन. आप भी फैमिली मेंबर हैं. Kushagri, would you recommend the students watching this interview of yours, your future CLAT aspirants, to join Excel with Nikhil? I don't think there is a better answer than yes, absolutely. Because Excel with Nikhil has helped me personally a lot. आपने काफी ज्यादा हेल्प किया है. जीके जो कि इतना ज्यादा वास्ट टॉपिक है, उसको कवर करने में, उसमें कॉन्फिडेंस लाने में, इट हैज बीन वेरी हेल्पफुल. And I think overall, if you are a CLAT aspirant and if you are somebody जिसको जीके से डर लगता है या जिसके लिए जीके एक anxious या anxiety point है, तो I think Excel with Nikhil is the best option, one of the best options out there. I think जहाँ पे आपको nervous energy भी control करने मिलेगा. You even get to understand. And if you're somebody like me जिसको बहुत ज्यादा चीजें interesting लगती है, you get into it a lot and then you get out of it very easily. So I think Excel with Nikhil continuously keeps the GK very interesting. So it holds your attention, it grabs your attention, and you can just understand everything. And then I mean, sir, आप भी beat session में you recall the things done in the past session. So I think that helps a lot because उसके बाद it is just ingrained in your brain. So I think if you are a CLAT aspirant, then you need to be a part of the Excel with Nikhil family. It was lovely talking to you, Kushagri, and I remember these words ingrained in brain. आपने अपना रैंक, आपने अपना स्कोर हम सब के दिमाग में, दिल में इनग्रेन कर दिया है. You are a motivation to so many other future aspirants. I'm pretty sure everyone would be happy after watching the beautiful insights जो आपने दी. एंड फ्रेंड्स, जो एच हो गया है हमारी मेमोरी में, जैसे कुशाग्री की मेमोरी में इतने सारे जीके के फैक्ट्स और बहुत सारी और चीजें एच हुई व्हाइल स्टडिंग विद एक्सेल विद निखिल, हमारी मेमोरी में जो एच हुआ वो ये हुआ कि पॉजिटिव थिंकिंग, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी डिटर्मिनेशन, बहुत सारी विल पावर टू स्टील द टाइम इवन फ्रॉम कंपल्सरी एक्टिविटीज लाइक अटेंडिंग द स्कूल, कंबाइंड विद एक कंसिस्टेंट फेथ कि यार मेरे को करना है, ऑल इंडिया रैंक 1 अपने नाम के आगे लगाना है. दिस इज द रेसिपी दैट लीड्स टू ऑल इंडिया रैंक 232 with a amazingly outstanding score of 96.25. एक हाईली कंपेटिटिव ऑल इंडिया लेवल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को क्रैक किया कुशाग्री ने. एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, कुशाग्री. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एक्सेल विद निखिल प्लेटफॉर्म. एंड आपको बहुत ढेर सारी विशेस फॉर द लॉ स्कूल एंड योर जर्नी इवन बियॉन्ड दैट. मे यू रीच द पिनेकल ऑफ सक्सेस. ऑल द वेरी बेस्ट. सो प्राउड ऑफ यू बच्चे. Thank you so much, sir. Actually, it has been my honor and pleasure to be part of the Excel with Nikhil family and to have you as one of the mentors I've had. So, thank you so much, sir. Thank you so much for having me. Thank you, Kushagri. Friends, if you love these videos, if you too want to excel in life, if you too want to reach your dream law schools, subscribe to Excel with Nikhil. Get in touch with me. Check out the description of this video. You'll find the link for the Telegram group, the Instagram link, the WhatsApp number, the contact number. आप भी जुड़िए and be an integral part of Excel with Nikhil. Thank you so much, Kushagri. Thank you so much, friends. Jai Hind.